अगर आपने एक लिस्ट क्रिएट की है जिसका नाम है लिस्ट नंबर्स लिस्ट, राइट? उसकी लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट? जैसे ये हमारे पास लिस्ट है, राइट? उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे क्या? लेंथ फंक्शन, राइट? पहले हम लिखेंगे प्रिंट, राइट? उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लेंथ फंक्शन, राइट? नंबर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने वो बताएगा, राइट? इंडेक्सिंग और लेंथ में फर्क है। इंडेक्सिंग जो है स्टार्ट होती है कैसे, कहां से? इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स start from 0, sorry, 0 1 2 3, and लेंथ जो है, लेंथ ऑफ लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम 1, right? So you just keep in mind that how to find the length of list, right? Now we will print on the screen, you will get what? So this is the length of list. How many elements? 10 elements, right? Now I want to add the element, suppose 1, 1, you will get what? The 11, right? So for finding the length of list, you will use the length function, and length function always start from number 1 2 3 4, right? And indexing always start from 0 to 1 3, right? So this is all about the how to find the length of list in Python, right? If you're new on my YouTube channel, please subscribe my channel and also stay connected with me. You will learn Python, you will learn everything in Python, right?